हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज वासुदेव पंडा। वेलकम टू मास्टर ऑफ इंग्लिश। पिला माने यूजीसी रो नुआ कैलेंडर नुआ गाइडलाइन कोविड कटकणा को दृष्टि रखी आसी जाइए। बहुत पिलांकर प्रश्न थिला ग्रेजुएशन पिला मानकर जे सर यूजीसी गाइडलाइन ऊपर गोटे वीडियो करंतु। तो यही वीडियोटा से पिला मानक भाई जो माने वर्तमान माने ग्रेजुएशन लेवल रे अछंती, जो माने वर्तमान फर्स्ट सेम जीवे, जो मानकर नुआ एडमिशन हबो, तो यही वीडियो रे हम देखिबा नुआ गाइडलाइन रे कोन अछि, फर्स्ट सेमिस्टर एग्जाम केबे माने फर्स्ट ईयर क्लास केबे स्टार्ट होबो, ऑड एंड इवन सेमिस्टर रो माने क्लास केबे सुधा स्टार्ट होबो कि परीक्षा सिस्टम टा कोन होबो तांकर, तापर सिक्स सेमिस्टर एग्जाम केबे सरीबो, केबे रिजल्ट बाहरिबो। तो यही डिटेल्स यूजीसी गाइडलाइन पूरा सब स्टेट को पठाई, एटा ऑल ओवर इंडिया रे लागू होईची आ ओडिसा रो सब यूनिवर्सिटी पई ए गाइडलाइन टा प्रযোज्य। ताहले हमें विलंब करबानी, वर्तमान स्टार्ट करबा वीडियोटा। तुम जेंति देखि पारुथो मोबाइल स्क्रीन पर अछि तमरो UGC guidelines on examination and academic calendar in view of the COVID-19 pandemic July 2021 कौन लिखा है? The University Grant Commission UGC had issued guidelines on examination and academic calendar for the university in view of COVID-19 pandemic and subsequent lockdown on April 29 2020 April 29 2020 रे से माने ऑलरेडी तार पुराना कैलेंडर टा इशू करथिला। The said guidelines were later revisited as the number of COVID-19 cases increased and subsequently further revised guidelines were issued July 6 2020। तो एप्रिल जोटा होता ता एगेन्स्ट जुलाई 6 2020 रे पुणी थरे आउ सेप्टेम्बर 24 2020 रे पुणी थरे गाइडलाइन सब चेंज ही आसी। तो ये कौन करी सी यूजीसी constituted an expert committee to revisit the guidelines on examination and academic calendar keeping in view the prevailing situation due to the COVID-19 pandemic. The order of the Honorable Supreme Court of India regarding the cancellation of school board examination for class 12, the earlier order of the Honorable Supreme Court upholding the UGC guidelines July 6 2020 regarding terminal semester final examination and the larger interest of students, a copy of the guidelines is enclosed। तार कॉपी भी एतरे दिया हेची आउ जेहेतु माने सुप्रीम कोर्ट रो ऑर्डर हिसाब रे माने एग्जाम सब कैंसिल हेची। So in the case of higher education institution located at places where appropriate government or competent authorities has imposed restriction on public gathering, the higher education institution may plan accordingly। तो किंतु जदि एथरे जो एनक्लोज हेची, जो कैलेंडर टा एनक्लोज हेची, से कैलेंडर एगेंस्ट रे जदि कोनोसी एरिया कंटेनमेंट जोन हेची, स्थानीय कलेक्टर चाहिए से एग्जाम टा को पोस्टपोन करि परिबे, से एग्जाम टा को भी माने घुंचेई देई परिबे, सेटा भी गोटे क्राइटेरिया रे लेखाइची। may plan accordingly in my case, okay, in any case these recommendations shall not cause any restriction on the guidelines direction issued by appropriate government competent authority। तो यही यूजीसी गाइडलाइन अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट रे सपोज पैंडेमिक माने अधिका बढ़ुची कि सेठी रेस्ट्रिक्शन अच्छी, से माने चाहिए तार अगेंस्ट भी जाई पारिबे, काम करि पारिबे। वर्तमान आम सीधा जीवा पे कैलेंडर ऊपर को। ताले कैलेंडर टा तुम देख यूजीसी गाइडलाइंस ऑन एग्जामिनेशन एंड एकेडमिक कैलेंडर इन व्यू ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक। जो कौन लिखा है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बहादुर शाह जफर मार्ग, न्यू दिल्ली, जुलाई 2021। यूजीसी गाइडलाइंस ऑन एग्जामिनेशन एंड एकेडमिक कैलेंडर इन व्यू ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक, जुलाई 2021। इंट्रोडक्शन कौन लिखा है? कीपिंग इन व्यू द प्रिवेलिंग सिचुएशन ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। तो आखिर दृष्टि रखिकी कोविड-19 सिचुएशन को the order of the Honorable Supreme Court of India regarding the cancellation of school board examination for class grade 12, the earlier order of the Honorable Supreme Court uploading UGC guidelines of July 6 2020 regarding terminal semester final year examination, the earlier UGC guidelines on examination and academic calendar dated April 29 2020, July 6 2020 and September 24 2020 and the larger interest of students the following guidelines। तो सही तीनटा गाइडलाइंस अगेंस्ट रे जोटा से छाड़ी थिला एप्रिल 2020, जुलाई 2020, सेप्टेम्बर 2020 ना 24 2020 रे वर्तमान ए गाइडलाइन ता सेमान का अगेंस्ट काम करिबो। एटा नुवा गाइडलाइन हेला कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट डीम टू बी। सो इन दिस गाइडलाइंस द कंटिन्यूएशन ऑफ द अर्लियर गाइडलाइंस। तो एठी देखिबा एबे एग्जामिनेशन केमती हबो कोन हबो। The provision as continued in the guidelines issued earlier as mentioned above shall apply for the current academic session 2020-21। Further, the terminal semester final year examination 2020-2021 be compulsory conducted in offline pen and paper online blended mode by no later than August 31 2021।
तो ये जो रहिला पिले जो मानकर माने टर्मिनल सेमिस्टर फास्ट माने लास्ट टर्म एग्जामटा फाइनल इयर एग्जामिनेशन अगस्त 31 सुधा जेकोसी हालत रे भी कंप्लीट करबा पई जेकोसी परिस्थिति कंप्लीट करबा पई इंस्ट्रक्शन अछि द प्रेस्क्राइब प्रोटोकॉल्स गाइडलाइंस रिलेटेड टू कोविड-19 को दृष्टि रखी कि से ऑनलाइन करि पारंती ऑफलाइन करंती ब्लेंडेड मोड रे ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ ब्लेंडेड मोड रे भी करि परिबे फॉर इंटरमीडिएट सेमिस्टर ईयर स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट पिला मान पई असेसमेंट शाल बी बेस्ड ऑन इंटरनल इवैल्यूएशन प्रीवियस सेमिस्टर एज सजेस्टेड बाय 2020 गाइडलाइंस इंटरनल इवैल्यूएशन हबो अच्छा एकेडमिक कैलेंडर वर्तमान देखिए शिक्षा व्यवस्था जो एकेडमिक कैलेंडर रहा तार कौन कौन अच्छी द प्रोविजन कंटेंट इन द यूजीसी गाइडलाइंस डेटेड 24/9/2020 शाल बी एप्लीकेबल फॉर द एकेडमिक सेशन 2021-22 से जो पुराना गाइडलाइनटा थिला 2021-22 सेटा रहिबो फॉर स्टूडेंट ऑफ द इंटरमीडिएट सेमिस्टर ईयर को मान पे इंटरमीडिएट सेमिस्टर ईयर द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में स्टार्ट देयर एकेडमिक सेशन इन ऑनलाइन ऑफलाइन ब्लेंडेड तीनटा मोड देला ऑनलाइन भी हो पार ऑफलाइन भी हो पार ब्लेंडेड बोथ ऑनलाइन ऑफलाइन हो पार एज अर्ली एज पॉसिबल जिते शीघ्र पारे आरंभ करेंगे फॉलोइंग द गाइडलाइंस डायरेक्शन रिलेटेड कोविड-19 पैंडेमिक इश्यूड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कंपिटेंट अथॉरिटी एदर सब जगह कौन कर स्टेट गवर्नमेंट को यूजीसी इंक्लूड कर In addition, the following guidelines shall also apply regarding the academic calendar for the first year undergraduate and postgraduate students in higher education institution. कौन कहला द फॉलोइंग गाइडलाइंस एटा फर्स्ट ईयर पिला मानक पई माने पीजी आउ यूजी पिला मानक पई फर्स्ट ईयर पिला मानक पई एटा वर्तमान आमे पढिबा कोन नंबर 1 द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑर्डर डेटेड जून 22 2021 इन रिट पिटिशन जोटा ममता शर्मा मैडम करिथिले एजुकेशन एंड अदर्स हैज नोटेड एज फॉलोज कौन लिखा है सेतरे Attorney General for India by pointing out the UGC will be issuing necessary instruction to ensure that the admission process by the college and institution should commence only after the declaration of result by the CBSE and ICSE including the state boards. तो सबू स्टेट बोर्ड्स रिजल्ट न बाहरिला पर्यंत एडमिशन प्रोसेसटा स्टार्ट हो पारिबो नाही दिस इज द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट Accordingly, higher educational institutions shall ensure that the admission process for undergraduate courses program for the academic session 2021-2022 commence only after the declaration of result by the CBSE, ICSE and state boards. ताले CBSE, ICSE और state boards और result बाहरला परे ही +3 admission आरंभ होबो. It is expected that all the schools boards will declare their results for the class grade 12 examination by July 31, 2021 and as per the order of the Honorable Supreme Court कही जे जुलाई 31 सुधा सब स्टेट बोर्ड रिजल्ट डिक्लेरेशन हम नंबर 2 नंबर कौन लिखाई एडमिशन टू द फर्स्ट ईयर कोर्स प्रोग्राम फॉर द सेशन 2021-2022 shall be completed by no later than September 30, 2021 सेप्टेम्बर 30, 2021 पूर्व कौन भी कंडीशन रे तमर एडमिशन सरीब +2 फर्स्ट ईयर पिला एडमिशन सरीब द लास्ट डेट फॉर एडमिशन टू फिल अप द रिमेनिंग वैकेंट सीट्स विल बी अक्टोबर 31 माने जो वैकेंट सीट रहिबो ताहा अक्टोबर 31 पूर्व निश्चित भाव सरीब द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कैन बी एक्सेप्टेड अप टू डिसेंबर 31 तो जो डॉक्यूमेंट्स सबमिशन रहा डिसेंबर 31 पर्यंत डॉक्यूमेंट्स सबमिट करि परिबे पिला माने 3 द एकेडमिक सेशन 2021-22 शैल कमेंस लेटेस्ट बाय अक्टोबर 1, 2021 फॉर फर्स्ट सेमिस्टर स्टूडेंट फर्स्ट सेमिस्टर क्लास के स्टार्ट हम अक्टोबर 1 रु जेकोसी कंडीशन एट एनी कंडीशन द क्लासेस विल बी स्टार्टेड 4 नंबर अकॉर्डिंगली हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन शैल फॉलो द कैलेंडर गिवन बिलो और द एकेडमिक सेशन 2021-2022 देखिबा कैलेंडर admission process of undergraduate level program in viewpoint of academic calendar to commence only after the declaration of results by the CBSE तो रिजल्ट बाहरला पर एटा स्टार्ट हो केते 31/2021 सुधा समस्त रिजल्ट बाहर तापर स्टार्ट हो कंप्लीशन ऑफ एडमिशन प्रोसेस केबे 30/9/2021 भितरे सेप्टेम्बर 30 भितरे सरीबो कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस फॉर इंटरमीडिएट सेमिस्टर एज अर्ली एज पॉसिबल एडमिशन जते जल्दी सरीबो क्लास सेते जल्दी स्टार्ट हो commencement of classes of undergraduate postgraduate student first fresh batch first semester 1/10/2021 ताले अक्टोबर 1 रु माने क्लास स्टार्ट होबो तापरे रहिला तमर प्रिपरेटरी ब्रेक कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेमिस्टर ब्रेक ताहेले कोन हला पिले अक्टोबर रु तमर नवंबर डिसेंबर भितरे तमर फोर्थ सेमिस्टर एग्जाम हे जीवो विद इन डिसेंबर यू आर टू अपीयर योर फोर्थ सेमिस्टर एग्जाम कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस फॉर इवेंट सेमिस्टर और एटा और गला इवेंट सेमिस्टर के टू बी प्लान्ड बाय द हायर एजुकेशन
ইনস্টিটিউশন তো সেই যে ইভেন মানে সেমিস্টার 2টা সেটা হায়ার এজুকেশন ডিপার্টমেন্ট মানে সেই কলেজ প্লান করিব তা দেন কন্ডক্ট অফ এক্সামিনেশন সেমিস্টার ব্রেক এগেন আউ থর সেমিস্টার ব্রেক হব সেমিস্টার ব্রেক এন্ডস 31/7/2022 তো জুলাই 7ରେ ତମର ସେମିଷ୍ଟାର ବ୍ରେକ୍ ସରିବ ଦେନ୍ କମେନ୍ସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ନେକ୍ସଟ ଏକାଡେମିକ୍ ସେସନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ବେଚ୍ 1/8/2022 ରୁ ତମର ଫର୍ଷ୍ଟ ଇୟର अगेन स्टार्ट हम माने तुम थर्ड सेमिस्टर स्टार्ट हम जो पिला वर्तमान पढ़े तो यहीटा थिला पिले कौन तुम यूजीसी कैलेंडर वर्तमान देखा कौन गाइडलाइन कौन अच्छी इफ देयर इज ए डिले इन डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जदि डिले होची हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में प्लान एंड स्टार्ट द एकेडमिक सेशन बाय अक्टोबर 18 मैक्सिमम टाइम the teaching learning process may continue in offline online blended mode both the mode can be taken higher education institution may plan for classes breaks conduct of examination semester break etc during the period October 1 2021 to July 31 2022 following necessary protocols guidelines directions advisories issued by the central state government and competent authority from time to time in view of COVID-19 तो COVID-19 जदि आउटब्रेक बढ़ुचे सेटा माने सस्पेंड हो पारे आउ पुणी थे कंटिन्यू भी हो पारे शेष पॉइंट देखा 5 नंबर पॉइंट इन व्यू ऑफ द फाइनेंशियल हार्डशिप बीइंग फेस्ड बाय पेरेंट्स ड्यू टू लॉकडाउन एंड रिलेटेड फैक्टर्स ए फुल रिफंड ऑफ फीस शुड बी मेड ऑन अकाउंट ऑफ ऑल कैंसलेशन ऑफ एडमिशन माइग्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स अप टू अक्टोबर 31 तो जार स्टूडेंटर माने एडमिशन कैंसल हो कि एडमिशन कौन से असुविधा होची तार टोटाल फीज रिफंड हम देखा पिले फॉर द एकेडमिक सेशन 2021-2022 एज ए स्पेशल केस इट इज मेड क्लियर दैट द एंटायर फी इंक्लूडिंग ऑल चार्जेस शुड बी रिफंडेड सब फीज रिफंड हम अप टू अक्टोबर 31 2000 देयर आफ्टर on cancellation withdrawal of admission up to December 31 2021 the entire fee collected from a student should be refunded in full after deducting not more than 1000 maximum 1000 deduct kari paribo college ताठारु अधिका deduct kari paribo nahi The guidelines issued by the UGC on April 29 2020 and July 6 2020 highlighting the modes of teaching conduct of examination importance of physical and social distancing etc. should be read along with the present guidelines shall remain mandatory but the present guidelines shall prevail in the event of any conflict तो सेटा रहिले भी एटा होउची ता ऊपर बलवत्तर हैला 7 नंबर शेषटा the present guidelines are subject to the advisory directive issued by the apex statutory bodies council concerned AICT NCT BCA NMC DCI INC PCI IUS regarding examination and academic calendar सब institution जेतिकी आसुची हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट अंडर यूजी पीजी एग्जामिनेशन सब एग्जामिनेशन भाई ए यूजीसी गाइडलाइन टा फॉलो होबो Notwithstanding the present guidelines regarding the conduct of examination and commencement of the next academic session, every higher institution shall ensure that it is prepared in all respects to carry out the academic activities following necessary protocols, guidelines, direction, advisory issued by the central state government or competent authority from time to time in view of the COVID-19 pandemic. So this is what we call the UGC guideline. Okay, hope so this should be informative for you. Thank you.